आप कौन है इसमें? सर आई एम द करेंट एसएचओ सर। एसएचओ? जी सर। क्या शुभ नाम है आपका? सर नरेंद्र रावत सर। नरेंद्र रावत साहब, ये बताइए इसमें अलग अलग गवाहों के नंबर कैसे आ रहे हैं? और टोटल 16 तो एग्जामिन हो गए, आपने किसी में 10, किसी में 11, किसी में 12। सही संख्या क्या है गवाहों की? सर सर पहला चालान सर 26 मार्च को सर काटा गया था, उसमें 11 थे सर। हाँ, फिर? सर दूसरा चालान 15/7 को काटा गया था 22 में सर, हाँ। उसमें 13 थे। हाँ। सर तीसरा चालान में 17/10 को, उसमें 12 थे सर, तो एग्रीगेट 15 हुए थे सर। एग्रीगेट 15? अच्छा, टोटल मिलाकर चाहिए तो टोटल 16 एग्जामिन होगा इसमें तो। हाँ जी सर। उसमें सर 15 में से 2 जो थे सर ड्रॉप कर दिए थे अभियोजन ने। हाँ। और उन्होंने 3 सर ऐड कर दिए थे। तो अभी तो 16 पूरे हो गए फिर। हाँ सर 16 पूरे हो गए सर। तो फिर अब डिले क्या है ट्रायल में? सर ट्रायल में कोई डिले नहीं है सर अभी। सर मुलजिम ट्रायल पे है सर वो। मुलजिम तो ट्रायल पे ही होता है। जी सर। ये कंप्लेनेंट ट्रायल पे होता है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं, कोई नया प्रावधान आया है तो बताइएगा कि कंप्लेनेंट ट्रायल पे रहता है। ट्रायल पे तो मुलजिम ही रहता है। किस स्टेज पर है दावा अभी? सर फाइनल डिस्पोजल पे है सर। जी? मुलजिम बयान हो गए? नो लॉर्ड नहीं सर। सर। एक मिनट रुक जाइए आप इधर। कब लगा है मुलजिम बयान के लिए? सर इसकी जानकारी नहीं सर। यस। Yes, Lord किस sir. स्टेज पे लगा है? Accused statements, Lord sir. हैं? For recording. Accused statement, तो Lord sir, रिकॉर्ड कराइए। 17 witnesses have initially in charge sheet, Lord sir. 12 अरे witnesses. उसको भूल जाइए, अब वो Lord सब sir, हो गया। My humble submission, Lord sir. My humble submission. एक्यूज स्टेटमेंट Yes, के लिए Lord लगाए ना? sir. रिकॉर्ड कराइए My- स्टेटमेंट। My humble submission, Lord 30 sir. दिन में ट्रायल पूरा My- करने के लिए बोलते हैं। Lord sir, my humble submission. Kindly see the earlier order of this honorable court, जी। Lord sir. In Salman case, Lord sir. In first bill. हाँ, सलमान में क्या? Yes, Lord. Last order. Kindly see last order, Lord sir. बताइए ना, पेज डेट किस तारीख का ऑर्डर पढ़ना है? In this case. In MCRC number 37356 of 23, Your Lordship. जी। Yes, Lord sir. The last order sheet is marked as Annexure A3, page number 12. पेज नंबर 12। 12, Lord sir. ऑन और बिफोर 30 साल। Yes, इसका एक्सप्लेनेशन now- बुला लेते हैं जज now- साहब ने क्यों नहीं किया। Now, Lord sir, my humble submission. In my bill application, kindly see my bill application, Lord जी। sir. Page number, Lord sir. आप It's a- सलीम के लिए हैं? Yes, Lord. Salim के जी लिए. जी। Lord sir, my earlier bill application was dismissed on merit, Lord sir. एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज। Yes, Lord sir. जी Yes, Lord sir. My earlier 3 bail application dismissed on merit, Lord sir. जी। Thereafter, Lord sir, the applicant preferred a bail application before the Honorable ठीक है, Supreme. आई विल नॉट ग्रांट यू बेल। Supreme Court. आई रिकॉर्ड। Lord sir, kindly see A5, Lord sir. हाँ, A5 बताइए Yes, क्या sir. कहा सुप्रीम कोर्ट ने? A5, yes, Lord sir. पेज नंबर। Page number 25, Lord sir. हाँ। Lord sir, if operative part, Lord sir, if the trial is not completed within the 6 months of the 6 months from this day, we grant liberty to the petitioner to make appropriate application, renew his prior bail application before the trial court, and whereupon the trial court shall consider the same accordance with law. जी। Yes, Lord sir. Thereafter, I prefer a bail application before the trial court, Lord sir. Same has been dismissed, Lord sir. जी। My humble submission, Lord sir, that it is deemed to be, Lord sir, if the trial is not concluded within the 6 months, Lord sir, then the bail may be granted to the appellant. नहीं, It is, नहीं, चलिए। it is the हाँ ठीक है, Lord sir. देखिएगा। Lordship, I'll be highly obliged if Your Lordship may consider my application on merits, Your Lordship. I'll consider it on merits। आप परेशान क्यों हो रही हैं? देखिएगा, सलमान के लिए आपका शुभ नाम बताइए। Ratika Indurakshan. हैं? Ratika Indurakshan. वैसे कृतिका इंदु रखिया। ये सलमान में है आप? फॉर द एप्लीकेंट श्री नितिन गुप्ता, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट, अलॉन्ग विद श्री, आपका शुभ नाम बताइए प्लीज। नरेंद्र रावत। श्री नरेंद्र रावत, एसएचओ, पुलिस स्टेशन सुर्खी। जी सर। प्रोबेशन सर अभी हैं? अंडर ट्रेनिंग हूँ सर मैं। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप अधिकारी हैं पुलिस के, यूनिफॉर्म में हैं, जी सर। बस। जी सर। Till today, 17 witnesses has been examined. हाँ तो 17, हो गए। sir, 17 years, Lord sir. One another witness अब exam. तो एक्यूज स्टेटमेंट के लिए लगाए ना? जी सर। कब क्या तारीख लगी है? तो one of the September. लिखिएगा। statement. It is submitted that in 3 different charge sheets, different number of witnesses were cited. In all, there were 15 witnesses. 2 witnesses were given up, and 3 new witnesses were introduced. 4 new witnesses were introduced, and evidence of all the 17 witnesses is concluded by 25 was recorded by 24th 24th August 2023. Now case is fixed for accused statement on 11/9/2023. Full stop. Next para. Miss Indu Rakhiya submits that void order annexure order dated 28 April 2023. Trial court was given 3 months time to conclude the trial. Full stop. 3 months time is over. Therefore, the benefit of bail should be extended in favor of the applicant. Next para. आपके पास भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है क्या? अच्छा, लिखिए। Next para. Taking this fact into consideration that now, though there is a delay of about 1.5 months, matter is fixed for accused statement and trial is about to be completed, without showing indulgence on merits, and once all the witnesses have been examined, trial is going to be concluded
showing indulgence in the matter of third bail application will not be proper. Full stop. Trial court is directed to conclude the trial and pass judgment on or before 30th September 2023. With the aforesaid direction, this petition is disposed of. इसमें एक चीज लिख लीजिएगा, सलीम में सब बाकी चीजें रहेंगी, इसकी एप्लीकेशन जो है 4th है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऐड करिएगा. श्री Mahendra Chaube Yes, Lord. submits that applicant Salim had approached Honorable Supreme Court and had filed a special leave to appeal within bracket CRL bracket close NO within bracket S bracket close dot 1277 of 2023, whereby by order dated 6/2/2023, Honorable Supreme Court had observed that if trial is not completed within period of 6 months from this date, liberty was granted to the petitioner to make an appropriate application for renewal of his prayer for bail before the trial court, whereupon the trial court shall consider the same in accordance with law. Full stop. I have perused the order dated 12/8/2023, passed by the learned 8th Additional Session Judge Sagar, and it reveals that the trial court has categorically mentioned that last witness is to be examined on 24/8, and there is an allegation of committing criminal breach of trust and recovering and apportioning a sum of rupees 47 lakhs by selling the goods, and taking the whole gamut of facts that when the container carrying goods for Amazon company was duped in connivance with the applicants and material was shifted to another consignment, so to claim benefit of insurance by showing it to be a case of loot, at this stage merely on basis of some technicalities and certain delay in trial which cannot be solely attributed to the learned 8th Additional Session Judge Sagar, it will be appropriate that trial court is directed to conclude the trial by 30th September and pass judgment on its own merits without being influenced by any of the observations made herein. Petition can be disposed of without showing any indulgence on merits. Application fails and is dismissed. 3 criminal records in Salim. अरे होंगे, अभी बेल दे रहे होते तब होता ना criminal record का. Your Lordship, the applicant has only been implicated in the matter on the basis of the memorandum of the court, Your Lordship. ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है. But in this case, Your Lordship, nothing has been seized from हाँ, any ठीक है, accused person. बहुत अच्छी बात है. And Lordship, after अभी हम कुछ कह देंगे तो हो सकता है कि आपका एक्यूटल रुक जाए. वेट फॉर योर एक्यूटल. कितने दिन बचे? आज 5 तारीख हो गई, 25 दिन में ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा. Lordship, there is no evidence, Lordship. हाँ, ठीक है. That may be a ground for acquittal. But it's also ground for a bail, Your Lordship. चलिए. After Not a ground for fourth bail. 2 years, Lordship, they have been in jail, behind the jail, Lordship.